Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. It's a video session on daily news and editorial analysis dated 24 of November. Through this video session, I'll be discussing the important news and editorial both from the Hindu and Indian Express. The news and editorial that would be discussed will be relevant for the upcoming prelims examination conducted by UPSC, various state public service commission examination and even one-day examination conducted by different agencies of the state and the union government. So we'll see the important news and editorial respect to the examination. So let's get started with the detailed analysis. Before to that, I'll give you the highlights of the news. An important announcement about the open mock test. This is for the WBCS examination. We are providing the discussion and analysis of the open mock test, which is scheduled offline at 28th of November. The timing is from 12 to 2:30 p.m. The venue for the test will be at Elgin Road branch. For more details, you can reach out to this number, or for registration, you can directly use this QR code for instant registration. There's some reward which is also there for the aspirant. The rewards is followed like for the first rank, we're offering 5,000 rupees plus access to mainstay series. For rank between 2 and 3, we're offering 2,000 rupees as in cash and access to mainstay series. And those aspirant rank between 4 to 10 will get free full access to the mainstay series. So these are the facility which you can avail by enrolling yourself for the WPCS examination, that is for the open test. So make sure you are a participant and avail the benefit that is provided by us. Now let's get started with the news for the day. The first news highlight is about the WHO that has come up with the asking about China, the pneumonia cluster that is ongoing. The cases of pneumonia is on a surge that has raised concern for the WHO. The second important news talks about the AI regulation. Definitely जिस तरह से सेबी है उस तरह से कुछ AI के regulations के बताने की भी बात की गई है. The other news about the Manrega social audit, which has crossed 50% of the local bodies in just 6 states, and some states are even under performance. The second last editorial, where Supreme Court has categorically said that the governor has no power to veto the bill which has been actually passed by the state legislature. This has been the constant discussion in the daily news and editorial analysis. I'll add some other point that will be relevant from the examination perspective. And we'll conclude this session with today's editorial, that is engaging with EPIC, something very important that will help you in general studies paper 2, specifically for the other aspirant like खास करके जो बच्चे PSI optional में attempt करेंगे उनके लिए भी चीजें relevant होंगी. Let's get started with the detailed analysis one by one. So the first is about the mysterious pneumonia outbreak in China. Pneumonia की अगर बात करें, ये cases काफ़ी सर्च में है, स्पेसिफिकली चाइना में, और चाइना में भी कुछ स्पेसिफिक रीजन में इसे रिपोर्ट किया गया है. द रिपोर्ट इज बेसिकली देयर इन नॉर्थ चाइना, राइट, नॉर्थ चाइना में दिस इज रिपोर्टेड एंड इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल कंसर्न फॉर द WHO ने जो चाइनीज़ जो गवर्नमेंट है, हेल्थ ऑफिशियल्स हैं, हेल्थ मिनिस्ट्रीज हैं, उनसे भी इसके बारे में कंसर्न रेज किया है. They have given their opinion. I'll discuss with you what they have actually said. And this is a serious apprehensions coming from the global health expert, because pneumonia can lead to any further escalations of the cases, and some other part is also witnessing the pneumonia outbreaks. Now, उससे पहले समझते हैं निमोनिया होती क्या है एंड व्हाट काउज निमोनिया इन चिल्ड्रन. स्पेसिफिकली अभी जो चाइना में निमोनिया रिपोर्ट की गई है, दीज निमोनिया इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग द चाइल्ड. स्पेसिफिकली कुछ स्पेसिफिक पॉपुलेशंस को ही ये टारगेट की हुई है. द निमोनिया कैन ईदर बी काउड बाय वायरस और बैक्टीरिया. तो या तो वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो, ये दोनों से हो सकती है. सो दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड. इट्स नॉट ओनली ऑलवेज virus or always bacterial. It can have both of them can be equally contributing in the part of pneumonia. So some of this is spread through direct contact with the individual who is already infected. तो either आप जो infected individual है उससे कोई एक healthy individual को transfer की जा सकती है. And the common virus and bacteria are the reason for pneumonia, which include pneumonia, influenza virus, ये virus की types हैं, right? Streptococcus, adenovirus, micropneumonia, human paraffin virus, respiratory syncytial virus, and group B streptococcus. So these are some of the virus type, even the bacterial and the virus type that is actually impacting. जब pneumonia की अगर बात करें तो ये सारे virus bacteria हैं जो कि actually impact करते हैं.
Now, specifically talking about India, I'm giving you this context to give you the a broader picture about how the things are there in India specifically. So, look at the pneumonia with children affected. So, under 5 specifically जो age group है under 5 में ज़्यादा ये effect देखी गई है. Pneumonia kills more than 1,27,000 children, and 53% of the children caused due to wasting, 27% caused due to air pollutions, and 22% caused by the indoor population. So high risk pneumonia की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है. 14% of the death were due to pneumonia in 2017. So these are some of the fodder point which you can use even in mains examination. मेंस में इस तरह के जो रेलेवेंट पॉइंट्स हैं, कुछ फोल्डर पॉइंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड पॉइंट्स में भी इंक्लूड कर पाएंगे. Now, coming back to the news context, WHO ने जो concern raise की है, specifically WHO has categorically asked Chinese health official that क्या conditions है, किस तरह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं. जो respiratory illness है, वहाँ पे clusters of pneumonia देखा गया है children के population पे, right? And WHO has cited this as a global infectious diseases. GID के अंदर इसे डाला गया है. They are also monitoring the part of undiagnostic pneumonia. Now, the emergence of new flu strain, which is there for the virus, it can have, it has a capacity और जो कि आगे बढ़ करके pandemic का भी रूप ले सकती है, because the undiagnostic cluster that is there in the respiratory illness can either be severe also, right? So we need to take into consideration. WHO ने कहा है that they are actually in conversation with the Chinese National Health Commission, जो कि एक apex body है चाइना की, which regulate the part of health there. तो उनसे भी रिपोर्ट मांगी गई है इस रेस्पिरेटरी डिजीज को लेकर के. एंड इफ यू लुक बैक टू द पार्ट ऑफ द थिंग्स विच हैज एक्चुअली अकर ड्यूरिंग द कोविड-19, अगर रेट्रोस्पेक्टिवली देखें सार्स और कोविड-19 में भी जो वायरस हुई थी पहले, दैट वाज आल्सो अ न्यूमोनिया वायरस, राइट? सो इट इज एंटिसिपेशन कि किसी कोई नई तरह की पेंडेमिक्स फिर से ना हो, बिकॉज सार्स एंड कोविड-19 हैज इट इंसेप्शन फ्रॉम द न्यूमोनिया वायरस इटसेल्फ. Now, WHO ने कुछ guidelines भी दी हैं. The guideline include recommended vaccines should be there, whatever vaccines that we're using for COVID-19 or specifically concerning the pneumonia, क्योंकि यहाँ पे age factor है, because mostly children are actually there. So child को देखते हुए जो vaccination process है वो complete करने की जरूरत है. Distance from the people who are actually ill, जो COVID-19 के precautions थे, सारे precautions same हैं जो WHO ने लगभग दिए. Get tested with the medical care that you are needed, wearing mask with appropriate things required, ensuring good ventilations and regular hand washing. So these are some of the latest recommendations coming from the WHO. Now China ने अपने clarifications में कहा है, basically when WHO has actually sought their clarification that you tell us what exactly the situation and how the things can be taken care of. So Chinese people have actually said, the authorities have said, there's no usual or new pathogen that has been detected in the upsurge of the respiratory illness in the North China. Specifically, सारी cases अभी north में ही देखी गई हैं. They are closely monitoring the situation and they're close contact with the national authorities of China as well. So, I mean, still as of now, the severity has not yet been raised concern by the Chinese authorities, but WHO ने अपने precautionary measures में सारी चीजों को फिलहाल clear कर दिया. Now, need a regulator like SEBI for AI. This is a statement that was given by the Prime Minister Economic Advisory Council member, and he has categorically stated that India will evolve with a norm where regulatory framework for AI, that is for artificial intelligence, will be taken care as a regulatory body that is there with the SEBI. अगर market regulator की बात करें तो SEBI actual में functions करती है as a market regulator. तो हमें same SEBI तरह जो SEBI है उसी तर्ज पे हमें AI के लिए भी एक body चाहिए, right? And this is very important. We have seen the cases of deepfake, जहाँ पे कई cases report किए हैं. Even the Prime Minister video, famous celebrities has been reported by the victim of deep cases, animations and other videos that were reported. Now, क्या recommendations और measures actually में बताई गई है Prime Minister Economic Advisory Council की तरफ से? They have said that we need an AI regulations at this point of time, and India at this juncture definitely require. अगर आप बात करें United States की, even if you talk about the European Union, they have a specific rule to the artificial intelligence, right? They have come up with the complete detailed guideline as of now. But India की बात करें, we do not have some guideline to this regard. Now the Union Minister of IT has actually said कि जो गवर्नमेंट है वो डीप फेक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक नई थ्रेट की तरह देखती है जहाँ पे डेमोक्रेसी के लिए एक नया खतरा है. Now he said that we have planned for 4 key pillars. This is what the Minister for IT has actually said. What they are planning for
द डिटेक्शंस ऑफ डीप फेक। एज आई हैव टोल्ड यू, काफ़ी से जो फेमस सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस, उनके डीप फेक के वीडियोज़ वायरल हो रहे हैं, either from the voice part or from the videos part. Preventions of removing the reduced with their virality, जो खास करके वायरल हो रही है वीडियोस, उनको भी रोकने की ज़रूरत है. Strengthening the reporting of the mechanism and spreading the awareness among the technology. So this can be done through the awareness. The mass awareness can be done through the digital media platform itself, or the news people, the media houses can also play an important role. The government has already issued the notice to the companies, जहाँ पे उन्हें बताया गया है कि जो IT रूल्स हैं, स्पेसिफिकली IT रूल्स जो नई फ्रेम हुई है 2022 की, उसके थ्रू वो काम करें, नहीं तो उन पे स्ट्रिक्ट एक्शंस लगाए जाएंगे और पीनल प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे. Now, Manrega social audit in the states. This is something that talks about the social audit and their performance in different states. तो अगर बात करें पूरे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑडिट प्रोसेस को कंप्लीट किया है व्हेन इट कम्स टू मनरेगा, एंड इन मोर देन 50% ऑफ द ग्राम पंचायत. विल सी द डिटेल टू दैट, किस स्टेट की क्या परफॉर्मेंस रही है. Now, provision of monitoring work की अगर पहले बात करें, दिस इज देयर इन द पार्ट ऑफ मनरेगा. अगर मनरेगा की बात करें, मनरेगा में एक्चुअली ये प्रोविजंस हैं जहाँ पे आर्टिकल 6 जो सेक्शन है, देयर इज सेक्शन 17, इट्स नॉट आर्टिकल, इट्स सेक्शन 17 में ये बात की गई है दैट the Gram Sabha should monitor the execution of the work. So they are actually the supervisory body, or you can say they're taking care for the part of the entire work. So each state have a social audit facility that is supposed to be work independent with the implementation of the authorities. तो इसी ऑडिट स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी कुछ डायरेक्टिव इशू किए थे 2016 में. And under this, every social audit has to be there with 0.5% of Manrega expenditure that is incurred by the state of the previous year, right? And these number are sourced from the management, जहाँ पे खास करके जो MIS की बात करें, MIS on the social audit which is maintained by the Ministry of Rural Development, MORD जिसे भी कहते हैं, they are actually maintaining the part of data, और सारी data जो ली गई है इस particular news में वो MORD के थ्रू ही, खास करके MIS की जो data है वहाँ से बताई गई. Now, states की क्या performances रही हैं? Kerala is the state, is the only state, even I will call it only state that has 100% coverage to the gram panchayat. उसके बाद जो performances है, which include for the Bihar, right? We have Gujarat, that is for 58.8%, Jammu Kashmir 64%, Odisha 60%, and Uttar Pradesh with 54.97%. और states में कुछ और states हैं which include Telangana, Himachal Pradesh and Andhra Pradesh. Now we'll see some underperformance states. कौन कौन से स्टेट की परफॉर्मेंस खराब है उससे पहले I'll show you a map so that it give you the clarity कि किस तरह से कौन से स्टेट्स पे. You can see for Kerala and this is for Odisha. Now the uniform problem which is there for different state which include Madhya Pradesh जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम social audit is 1.73, Mizoram with 17.5, Chhattisgarh with 25.06 and Rajasthan for 34.74. तो मध्य प्रदेश में काफ़ी कम है. The possible uniform irrespective because of the power across the countries, खास करके अगर पार्टी इन पावर की बात करें, अलग अलग स्टेट में अलग गवर्नमेंट की पावर है, which also created distorting in part of executing the social audit part. Now, multiple times it has been reminded that social audit जो है that should be conducted regularly, और मनरेगा की जो फंड है that should be, अगर वो ऑडिट नहीं की जाती है, if the audit process is not done within the time, the government will withhold the part of amount that is given to them. So this is a kind of preventive measures that government is also taking as a part of advisory. And state government has actually complained in delaying of this fund. The center is not releasing for the social audit with the work independence and central government in time. See that I've told you, अगर cooperative federalism की बात करें, if you look at the cooperative federalism where there is a ruling party, I mean NDA or BJP whatever you call it, जहाँ पे उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे social audit भी अच्छी नहीं है, तो दूसरे स्टेट में contradictory obvious होनी है. तो ये भी काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट होती है कि रूलिंग पार्टीज के जो स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार है उनको ज़्यादा फेवर दिया जाता है, एंड फॉर दैट द स्टेट दे आर नॉट एक्चुअली प्रोवाइडिंग. Now, governor hold no veto power over the bill. This is the Supreme Court that has come up with this statement, and this is a continuation in the news that has been following in the analysis as well. तो गवर्नर पे काफ़ी हद तक सवाल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन द मेंस एग्जामिनेशन, एंड इवन फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मेक श्योर any questions related to governor will be definitely asked, right? So Supreme Court has categorically said कि जब भी कोई bill, अगर if a bill is passed by the state legislature ने इसे पास किया है, स्टेट असेंबलीज ने अगर उसे पास किया है,
तो गवर्नर को उसे पास करना मैंडेटरी होगा, दोबारा अगर पास किए तो मैंडेटरी होगा। Now, guideline by the bench, the Supreme Court bench has said if the governor withhold the assent with the bill, it must return to the state legislature as soon as possible. जिस तरह से तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने एक्चुअली होल्ड करके रखा हुआ था, एंड असेंबली reiterate the bill without any amendment, the governor has no choice or discretion to give his assent. Right? तो ये जरूरी होगा कि गवर्नर को assent देनी होगी. And to make the thing functional, definitely a bill need to be passed so that it become act. और finally जो भी act है वो लोगों को welfare के लिए utilize की जा सके. Now, the ultimate authority in this regard, the Supreme Court has said that the ultimate decision whether the bill should be accepted and even the advice of the governor is there or not, it remains with the state legislature alone. Court ने कहा है कि governor who chooses to withhold the bill during any future may be coming up with the contradiction of the constitutions because governor के पास जो power है in this regard is limited. I'll tell you what are the powers that is there with the governor. The governor, as unelected of the head of the state, would be in a position to virtually veto the functioning of the legislative domain, जहाँ पे elected legislature के पास ये power है कि वो actions ले और दोबारा अगर बिल भेजी गई है गवर्नर के पास तो उसे मैंडेटली पास करे. नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में अगर बात करें गवर्नर को जो पावर दी गई है वो कौन कौन सी चीजें हैं, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट दैट इज एक्चुअली मेंशन. आर्टिकल 163, just to correct, article 163, this is the part of the constitution where it deals with the power of the governor, right? और स्पेसिफिकली आर्टिकल 200 में बातें बताई गई हैं कि कैसे गवर्नर के पास पावर होती है किसी बिल को होल्ड करने की और क्या क्या अल्टरनेटिव्स होते हैं. पहले अल्टरनेटिव्स हैं दैट ही कैन ग्रांट असेंट टू द बिल, दिस इज अ नॉर्मल केस. He can withhold his assent for certain period of time depending upon the part of the gravity of a bill or the part which is there. Return for the bill for reconsideration, अगर reconsider होके आई तो फिर पास करना मैंडेटरी होता है और बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए भी रिजर्व की जा सकती है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. So these are some of the constitutional provisions. Now moving ahead with the editorial for the day that talks about Asia Pacific and economic cooperations. We'll see the detail to that. First we'll see what is the Golden Gate declarations. ये आपके एग्जाम्स के लिए both for prelims and mains this is pretty relevant, right? चाइना और यूएस की किस तरह से रिलेशंस यहाँ पे बढ़ी हैं, अपॉर्चुनिटी फॉर ताइवान एंड द कंक्लूजन पार्ट. Now recently US ने होस्ट किया था एपेक्स को and they were hosting on the part just to remind you here. और ये कॉपरेशन जो हुई हैं between the summit was actually there in San Francisco after a gap of 12 years. So this become important for the mains examination जहाँ पे आपसे एपेक्स के बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं. The summit concluded with the adoptions of the Golden Gate Declaration. What is this? Before that, I'll come to Golden Gate Declarations. आपको जानना चाहिए कि एपेक्स के मेंबर कंट्रीज कौन कौन से, बिकॉज समटाइम्स दिस बिकम इम्पोर्टेंट. मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडिया इज एक्चुअली नॉट द मेंबर ऑफ एपेक कंट्रीज, राइट? नाउ गोल्डन गेट डिक्लेरेशंस की बात करें, द डिक्लेरेशन अंडरस्कोर द कमिटेड टू क्रिएट अ रिजिलिएंट सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल मेंबर इकोनॉमी. जो मेंबर इकोनॉमीज है 21 इकोनॉमीज हैं उनके लिए. The declaration says that Apple will seek the functioning with the dispute settlement, जो कि WTO के साथ है, खास करके WTO, the World Trade Organizations. They are actually the part जहाँ पे trade promotions के लिए, खास करके FTA की अगर बात करें, for the free trade agreement, they are the one which is taking care for the final implementation. और इंडिया ने कंसिडर किया है that the regional trade agreement for the Indo-Pacific with the US to benefit the supply chain initiative, जहाँ पे US के हेल्प से इंडिया को भी एक अल्टीमेट बेनिफिट्स मिल सकती है. APEC is among the early constitution in the Indo-Pacific, but India is not included in the APEC. This is a point to be noted for the prelims examination. Now, China और US की relations की अगर बात करें, APEC summit में दोनों countries को काफ़ी help हुई है. The things which was actually not well between US and China, as they have come to an meeting, they have come to an agreement जो कि काफ़ी time से suspended थी. There's no new agreement to this, but again the US believe that China's way and its value need to be changed. See, I mean approach जो चाइना की बदली है उसको काउंटर करने के लिए भी यूएस ने उनसे दूरी बनाई हुई है, राइट? एंड एपेक emphasizes the rivalry between them, perhaps reduced rough edges and the confrontations. Opportunity for Taiwan, क्या क्या अपॉर्चुनिटी रही है ताइवान के लिए? ताइवान हैज बीन फाइटिंग फॉर इट्स राइट्स व्हेन इट कम्स टू ताइवान और चाइना. चाइना को काउंटर करने के लिए भी ताइवान ने इस तरह के इंटरैक्टिव सेशंस की भी बात की है. ताइवान हैज डिस्कस्ड द चाइनीज इकोनॉमी करेक्शंस and the comprehensive partnership. This is called comprehensive and progressive agreement for the trans-Pacific partnership. This is what has been important between China and Taiwan. और इस members में
जो एपेक कंट्रीज है उनके साथ मीटिंग हुई है, दे हैव डिस्कस्ड. यूएस इज मिसिंग विद दिस चाइना पार्ट बिकॉज दे फील दैट ये चाइना और ताइवान की कंट्रीज दोनों के बीच की मैटर, दे आर नॉट इंटरफेयरिंग ऑन दैट, राइट. यूके इज द लेटेस्ट इंक्लूजन इनटू इट एंड दिस ट्रेड मिनिस्टर टुक अप अहेड, जहाँ पे इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क भी बहुत हद तक मेटलाइज नहीं कर पाई है चीज़ों को. सो विल सी वेदर दिस अपॉर्चुनिटी बिटवीन द पार्ट ऑफ द समिट विच इज देयर एपिक, जहाँ पे कंट्रीज एक्चुअली पार्ट है, तो क्या ताइवान को इसकी बेनिफिट एक्चुअल में लॉन्गर रन में मिलेगी या नहीं मिलेगी. Now to conclude that part, इंडिया की स्पेसिफिकली बात करें, इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, दैट द एपेक्स विल फोकस ऑन द सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूजन एंड रेजिलियंस इनोवेशंस फॉर द इंडो पैसिफिक, जिसकी बेनिफिट एक्चुअल में पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में इंडिया को होगी. In order to obtain this, peaceful engagement between China and US need to be imperative because ये दोनों कंट्रीज को कहीं ना कहीं अपने जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको सुधारना होगा. If successful, they can make the EPIC locomotive sustainable and growth share for the benefit. This can also make India a better alternative for the FDI or other than China. तो चाइना को काउंटर करने के बाद इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन सकती है फॉर द बिजनेस हब, राइट. सो दिस वाज ऑल पार्ट ऑफ द कंक्लूजन्स. Now moving ahead with the answer discussion for the day. कल के जो सवाल है उसके करेक्ट ऑप्शन. For first, the correct option is A. इसके statement 2 incorrect है, statement 3 भी incorrect है और जो statement 1 है वो correct है. You can pause this video and read out the correct statement. For second, the correct statement is C, that both the statement are correct. Statement 1 भी correct है और statement 2 भी correct है. Now MCQ questions for the day. That is about the Tanzania. It's an African country that is landlocked. It is positions in the south of equator. The country is home to Mount Kilimanjaro. आप पार्टिसिपेट करें इसमें. पार्टिसिपेट करने के लिए क्वेश्चन नंबर लिखें, उसके बाद जो करेक्ट ऑप्शन है ए, बी, सी या फिर डी, उसे हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं. The second question for the day is about the Project Dolphin. It is a part of integrated development for the wildlife habitat program. The union government play an important role totally. So you have to check for the correct option, writing the question number followed by your correct options. So this was all about for the daily news and editorial analysis followed by the MCQ questions. If you have any other concern, queries about the WBCS mock test, other test, now enrolling for the test series, admissions programs, you can reach out to us. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video. Thank you for staying connected.